He comes from a lineage of great sages, yogis, and saints from India. He began his spiritual journey at the age of 7 and was fully realized by the age of 14. During this time, he delved into different practices and yaksha sadhana. He was a siddha, and many masters, saints, and sages used to the world, and only the advanced yogis and masters were aware of his divine presence. Only in the last 2 years he chose few people from the world and started guiding them in their spiritual paths, and those who have been closely associated with him have witnessed many miracles in his presence. Despite being a family person, he is a yogi and intends to help people entangled in this world achieve Jivan Mukti, liberation while being alive. He is truly in the world but not of the world, and if you really want to understand him, look him beyond his physical appearance and just sit with him, and you will never be the same again. In his presence you will transcend your body and mind and experience the state of Sat, absolute truth, Chit, pure consciousness, Ananda, eternal bliss. Let us fold our hands in front of his divinity and with a heart filled with gratitude and love welcome our spiritual guru, the realized soul, and our enlightened master, Guru Meenakshi Mishra. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री सदाशिवाय नमः। तस्मै श्री महादेवाय नमः। ओम महागणाधिपतये नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम शारदाय नमः। ओम सर्वदेवी देवताभ्यां नमः। ओम सर्वपितृमातृदेवताभ्यां नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जयंती देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रै नमोस्तुते। ओम शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मनं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणितार्थं प्रणमामि सदा शिवं। प्रणमामि सदा शिवं। प्रणमामि सदा शिवं। अहं
Brahmasmi. Good morning everyone. स्वागत है आप सभी का एंड गुड इवनिंग टू द पीपल फ्रॉम द अदर पार्ट. स्वागत है सभी का एंड टू दिस special session that we have started today. So people have been behind me asking like, no sadhana, sadhana, no sadhana. It has been quite some time, and so yesterday when I was thinking like what to start, what sadhana to give, and as we all know like जैसे श्रावण मास समाप्त होता है उसके बाद रुद्रगण, यमगण और देवी ये सब जागृत हो जाते हैं. So, जब ये सब जागृत हैं, so I thought that 9 days program तो हर कोई करते हैं. Anyways, we will do that. But this time, we will do a little different. जैसे कि आज तक हम शायद किसी एक देवी की साधना के लिए आपको we would initiate you for one particular deity or one particular devi before the real time process. But this time, I thought like you have evolved a bit. So as you have evolved a bit and you have been sitting here for quite some time, it's time to move to the next levels also. So when I said like moving to the next level, this time I have not chosen 1, 2, 3, 4 or 5. We have chosen 16 deities. And every single day you will do one sadhana. Chalega? We'll do it as a very simple process. Everybody can do it. Don't worry about that. But 16 दिन 16 देवियों की पूजा. उसके बाद शुरू होगा नवरात्र. फिर आएंगे नव दुर्गा की पूजा. So this time we are not going to celebrate Dashara for 10 days. We are going to celebrate it for 25 days. So those people, those who were missing out on the mantra of Shiva, I said, okay, so let us make them busy again. So are you ready for 16 days sadhana? And beyond that, who wants to continue with the 9 days sadhana? That is yours, your choice. Because that would be a more into a deeper and उसका तो विधिवत पूजा किया जाएगा, right? So you will be those who can put the colors, they can put the colors and विधिवत पूजा की जाएगी and Navratra is going to be another separate story altogether. पूजा तो बदला नहीं जा सकता लेकिन उसके अंदर बहुत सारे processes बदले जा सकते हैं. So that's what we will be looking at. But these 16 days, your commitment is required. If you are ready to do that, I'm going to guide you with every single day कौन सी देवी क्यों करना है उसे, why you will be doing that devi on that particular day, उसका मंत्र क्या है. And we will keep it as simple as possible. But if you are all ready, you just can show me a thumb or you can type yes or something like that. I get an indication that you are ready for that. Okay, good. So first and foremost thing, fold your hands, close your eyes, invoke that Devi, that at least she has given this idea to me to again start this something like that. क्योंकि इतने सारी जो 16 दिनात्मक पूजा होती है वो पीठों में मीन्स शक्ति पीठों में और द प्लेसेस वेयर देवी की पूजा होती है वहां पे 16 डेज की साधना होती है. बट हियर यू आर डूइंग मोर देन दैट, यू आर डूइंग 25 डेज. तो जो नव दुर्गा की साधना है वो अलग होगी एंड ये 16 डेज की साधना आप उससे पहले कर लोगे. And I don't know why I wanted to do that. Just yesterday I was sitting and he said, okay, so this is what you have to do. Okay, let's do it then. Chalo. So as you are all ready, so let me start the discussion or passing on the information why we will be doing this. क्योंकि mind is always inquisitive. हमेशा ये पूछता है कि क्यों करना है.
What is the reason? So we will start with the basic reasons why we will be doing it. Benefits क्या होंगे? फिर देवी कौन कौन है? वो देवी क्यों उस दिन? Why we have chosen that particular deity for that particular day? And then the mantras and everything will follow. And finally, at the end, I will guide you how you will be doing that. What are the requirements you will be needing to do it at your home? आपके घर में वो पूजा विधिवत ये मंत्र जाप जो भी दिया जाएगा उसको करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी. So now, the first and foremost thing, as you have already seen the name of the process that we have decided to go ahead with, is the Sodas Sadhana. Sodas means the 16. So when we are talking about the 16, you remember 16 is also the number of Lalita, Sodashi. So when all the people, those who do the sadhana of Sri Yantra, you know the importance of Sodashi. And when we also did a sadhana of Tripur Bhairavi or Tripur Sundari, at that time also you people know the importance of those 16. So this time, it just like every single day is going to be a year for you, and by the end of the 16 days, you will be at least 16 years old. Don't worry, you are not going to age by your looks. I'm saying by your sadhana, that's what I want to prepare you for. It's like every single day you are realizing something. Every single day you are experiencing something. Every single day you are going to move, because there are certain devis जिनकी साधना आपने नहीं की है आज तक. So even though you have not done the sadhana as a singularity of the goddess, but this is coming as a cluster. It's like a group of goddesses coming. It's all the manifestations of the goddess, the Adi Shakti itself, in her various forms, in her various ways. She has come across into this world in all phased and manners in order to guide its devotees in whatever way possible. So that is where we begin. So this sadhana, this spiritual practice that we are going to do before this Navaratri is very, very important for all of us, as it will help us to prepare the mind, the body, and the spirit to receive the blessings and the energies of the divine feminine. So the benefits, let's talk about the benefits of the sadhana of the 16 days. The first and foremost thing, before doing any kind of sadhana, the first and foremost thing that is required is purification. What is the first purification you should always work on? Pehla purification kya hona chahiye? The first purification should be of the mind, man ka. Because until and unless it is purified, you can pour water on yourself 1,000 times, of no use. So first and foremost thing, what this sadhana will do is the purification of the body and mind, and it will help us, the mind, to be clear, calm, and quiet, so that it is able to do the process correctly, absorb the energy perfectly, and get connected to the goddess instantaneously. Then it comes to the spiritual growth. As I said, every single day, let's grow by a year. This period is ideal for attaining spiritual progress, because now you all know that even from this 17th, when you are going to start this, it is also the beginning of the Pitru Paksha. And we all know that Pitru Paksha is a time in which the portals open from the Pitru Paksha, from the Pitru Loka to the Bhuloka. And in our culture, it is known that during this phase of Pitru Paksha, all our Pitrus, the guiding forces, the energies, the previous souls that have passed in our lineage, come down to this earth. And when they come down to this earth, you already know that as your parents guide you always, similarly, these
divine beings that are coming in the form of Pitrus and Pitris for us, they will also be available on this dhara, means on this loka of the bhuloka. And during that time, if you are doing the sadhana, their energy will also help you to enhance your sadhanas. So that is how, even if you see the timing is perfect, it is also going from 17th to the 2nd. So here you are beginning on an auspicious day. All the people, those who were not even able to, especially the females, as they always ask me, like, okay, males can do so many things for their ancestors, for their parents, and for the people, those who have already left this abode. What can we do? So these kind of sadhanas can help you. These sadhanas are going to be a part where you not only do the chanting for your own self, but you also do this in the name of your forefathers, so that even they get the benefits of it. And just think in this way. If somebody has come to your house and if you take care of them good, obviously they bless you, right? So that's where we are coming from. So as Haribhai, like always, things fall into place. I designed this program first. Then when I looked at in the calendar, it says like the Pitru Pakshi is beginning on that day. I said, what good could be? So let both the energies, because now, during this time, as we also know, that the portals of all the Devis are also open. Here, it is like a tremendous energy that is going to come. Certain sadhanas are going to take, there are certain mantras in this, which are very, very, you can call as aggressive mantras also. But what we are going to do is, we are going to do it in a very subtle way, so that every one of us is able to do the mantra and at the same time have a energy that is within their control. Okay. So that's how we are going to do that. So that is the second thing, the spiritual growth. Then coming the karmic cleansing. This period helps in releasing past karmas, thus clearing the path for the future blessings as well. क्योंकि पितृ लोग यहाँ पे, देवी लोग भी यहाँ पे, और आप अभी साधना करो. And during your sadhana, when all these energies are supportive to you, the entire cosmos becomes conducive. And when that conduciveness is available, जब ये सारे चीजें आपके हिसाब से हो रही है, that will also help you cut down on your karmic accounts. Then, divine protection. Invoking the goddess in separate forms and different ways during this period is believed to invoke her protection, keeping negative energies and harm away from you. Then the next benefit that you will get is the physical and mental health. So this chanting, the meditation, it all has a positive and effect on your physicality as well as your mental health. It brings calmness, focus, and rejuvenation to you as well. Then the last but not the least that always speak of is manifesting desires. For those with specific material or spiritual desires, the intense energy generated in these 16 days can help you manifesting your wishes with the blessing of the goddess. Are we ready to know which goddess we are going to invoke? What are the qualities that the goddess has? And why we have chosen this deity? Or rather, why this deity has chosen you? So we will be beginning the process. The first day sadhana that you will be doing is of Devi Bhuvaneshwari. She is, Bhuvaneshwari means the goddess of the entire Bhuvanas. So you are also in a Bhuvana and she is the goddess of that. So we will be starting with Bhuvaneshwari.
As goddess Bhuvaneshwari governs the cosmos and space, her sadhana will help us align ourselves with the universal forces. Performing this sadhana before Navratri opens the path to understanding the vastness of the universe and helps us become more receptive to the cosmic energies. पहले ऊर्जा की जरूरत है. So what we are going to do is we are invoke the Devi goddess as Bhuvaneshwari because she is the goddess of both the worlds. And here, when you are doing the sadhana on the Bhuloka, you will also get connected with the energies of the cosmos, and that cosmic energy will help you do your sadhana better. So the first thing that you get is the energy. Then the second thing, the second goddess that we'll be invoking on the second day, it is Matangi. She is the goddess of speech and wisdom. Doing the sadhana of Matangi sharpens one's intellect, communication skills, crucial for invoking the powerful energies of Navaratri. It will ensure that the words spoken during the Navaratri rituals are filled with purity and precision. मतलब वाक देवी. पहले ऊर्जा आ गई आप में. दूसरा बात क्या कर रहे हैं? शुद्धिकरण of the speech. So that when you are doing the chanting, when you are doing the mantras, when you are doing the sadhana during the Navaratra, it is clear. Okay. So the third Devi that we have called upon is none other than our Sodasi or the Tripura Sundari. Sodasi represents beauty, love, and ultimate power. Her sadhana will bring harmony, inner beauty, and grace into the life of the practitioners. It creates a pure vessel for receiving divine grace during Navaratri. Now, what she is going to do? She is going to help us become beautiful and prepare us as a bowl or a vessel so that we can collect the energies, receive the grace during the Navaratri. So it's just like this. You decorate a कलश को बिठाते हो ना, कलश को बिठाने से पहले आप उसको सुंदर तरीके से सजा देते. सो आपको भी साधना करने के समय आपको भी उसी तरीके से सजा दिया जाए. And then you become a beautiful vessel in which the grace is poured into. You don't actually put good things into a bad pot. So here, this sadhana will do that thing for us. It will make us prepare as a vessel so that we can accept the grace of the goddess. Then the fourth that we will go, नारायण की जिसने लोग पूजा करते हो, very fond of नारायण. So we have Narayani. Narayani is the source of strength and prosperity. Performing her sadhana will help us clear the obstacles, enhance the strength, and it will also ensure that we enter Navaratri with wealth, abundance, and divine protection. अब इसकी साधना क्यों? So that we have the abundance of not only the things that we want, abundance in ourselves, in our thoughts. And at the same time, when we are thinking of doing that sadhana, we also need protection. And this Devi, Narayani, is going to provide the protection to us during our sadhana also. Then comes Raja Rajeshwari. She governs the highest form of Shakti energy. And her sadhana will allow us to attune with the supreme cosmic power, preparing us for the intense spiritual upliftment during this Navaratri. Now, ये क्या करने वाली है? ये हमें ऊर्जा भर देने वाली है. She is going to fill us with that kind of energy so that we can sustain the sadhana for all these days. You have that kind of energy that we can carry along with that. Then we will be going to Jaya Durga. Jaya Durga symbolizes victory over evil. And doing her sadhana will ensure that all the negative forces, both internal and external, are taken care of. And it will allow us to approach Navaratri with a clear, powerful intention to grow spiritually. Then we will have now a Prachanda Shaktiyo ka
सम्मिलन हुए. It is just like a combination of the Saumya Shakti and the Prachanda Shakti. So here comes the next Devi, and it is none other than Ugratara. Ugratara sadhana will help us dispel our fear and overcome major challenges of life. And when we are going to perform the sadhana of this Devi, she will empower us to face any difficulties in life and enhance our spiritual resilience. Spiritual resilience मतलब कभी कभी आप साधना में भटक जाते हैं, कभी कभी लगता है कि अरे ये सब क्यों. So that resilience should be there. You should be consistent in your performance, kind of. You should be consistent in your sadhana. And that's where we are speaking of that this Devi will help us, that Ugratara will help us with clearing the difficulties of life and empowering us and increasing our spiritual resilience. Then we will have Harachandi. Harachandi is a fierce form of Durga. Durga का एक उग्र रूप है. And it removes deepest negativities of us that is lying within us, and even we are unaware of it. ये ऐसे नेगेटिविटी को दूर करेगी जो हमारे अंदर है और हमें पता भी नहीं. The unknown negativities. It's just like the undercurrent. You try to do all the good things, but there is something within you that stops you again and again, and you don't know why. At times you feel agitated, angry, but you don't know the reason behind it. At times you feel sad, at times you feel demotivated, at times something happens to you, but you don't know why. At times you procrastinate and you still don't know why. So ये सब क्यों होती है? आपके अंदर there are certain hidden things that are not showcasing itself up. So Devi Harachandi will help us to remove all these things, and the cleansing, she will provide the cleansing during this Navaratra and help us even cut down on the karmic barriers. Now, ये हमारे अंदर जो छिपी हुई वृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, what could be the reason that why these are hidden? Because these might not be from this life. ये आपके पुनर्जन्म की प्रवृत्तियां हो सकती है. That's why they are hidden and you don't know and how to deal with it. And that is where this Devi will help us even cleansing that. And once you cleanse those things, what will happen? Your karmic accounts are taken care of. So the hidden things are brought into light and cleansed. So ये हो गई Devi Harachandi. Then we will bring in Devi on the 9th day, Banadurga. Banadurga energy is protective and nurturing. क्योंकि आप साधना करोगे, साधना में आपको प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, साथ ही साथ संरक्षण के साथ आपका पोषण भी जरूरत है. मीन्स प्रोटेक्टिवनेस एंड नर्चरिंग ऑफ यू, ये दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी. So during the sadhana of this goddess Banadurga, it ensures the protection against unseen dangers and helps strengthen the connection with the natural elements, grounding the devotee for the intensive Navaratra in rituals. Unseen dangers. ऐसे अवरोधक बाधाएं जो आपको दिखाई नहीं देती. The things that you even cannot see, that they are coming. So Devi Banadurga is going to help you with taking care of that part. तो कितने देवी हो गए अब तक? 9. Then we will call upon another Shaumya Tivra Shakti, that's Tripura Bhairavi. Bhairavi represent the fierce transformative energy needed for internal destruction of ego. मैं बहुत साधना कर चुका हूं, मैं 9 देवियों की साधना कर दिया हूं, मैं ये बन गया हूं, मैं वो बन गया हूं, मैं भी भैरव बन गया हूं, मैं भी भैरवी बन गया हूं, मैं भी चंड बन गया हूं, मैं भी मुंड बन गया हूं. So you see, like when you do sadhana, even without you knowing, certain ego pops up within us. कई बार हमने देखा है कि लोग आके कहते हैं, आपको पता है मैं ना 9 दिनों का उपवास रखा हूं और 9 दिनों से कुछ नहीं खाया. मेरा सब कुछ तो छोड़ दिया, ये कब छोड़ेगा कि मैंने कुछ नहीं खाया.
अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो जीवित कैसे है तू अभी तक? तो तुझे बचा के रखने वाला कौन है? सो समहाउ समवेयर हमारे अंदर ईगो आ जाता है। सी एट टाइम्स इवन वी ऑल शुड बी केयरफुल ऑफ दिस बात। कभी कभी आप देखना पूजा करते हो और पूजा करने के बाद वाह क्या मस्त, दिस इज समथिंग दैट आई हैव डन टुडे, बहुत अच्छा पूजा, दैट्स गुड, एट सर्टेन लेवल इट इज गुड। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक ईगो आ जाता है हमारे। आप वी हैव सीन लाइक अगर हम ओम चैंटिंग करेंगे, बोलेंगे लेट्स चैंट ओम टुगेदर, देन पीपल आल्सो गो इनटू अ कंपटीशन कि किसका ओम बेहतर जाता है। मेरा ओम बहुत लंबा गया, आई chanted om for the longest, my om chanting was on the peak, my om chanting was the serene. I said, you are in spirituality or you are in a competition. So this is where at times even without knowing that comes up, आ जाता है, आता है, but it is not just, I cannot say that it is your fault, ये आ जाता है, that's what we speak of. But in order to give a control on that, whom are we calling upon? We are calling upon the Tripur Bhairavi. Who could be more fierce than her to actually cut down on that ego? So she will also help us to clear our mental and spiritual blockages, and she will prepare us for the intense meditative states during Navaratri. ये हमको नवरात्र के ऊर्जा के लिए तैयार करेगी, and at the same time it will destroy the ego and the impurities within us. Then again we'll bring in a sattvic energy on the 11th day, Devi Gayatri. So the Devi Gayatri sadhana will bring enlightenment. When the ego is gone, what should rise? जैसे अंधकार चला गया तो सूरज उगाता है, उसी भांति when the ego is taken care of, the impurities are taken care of, then the enlightenment should appear. And in order to bring that enlightenment, the mental clarity and the divine wisdom, we will be preparing ourselves with the sadhana of Devi Gayatri, so that the purification of the mind and soul happens, and we are more receptive to the divine energies invoked during the 9 nights. ये हमें शक्ति प्रदान करेगी, ये हमको ज्ञान प्रदान करेगी, ये हमको सहनशीलता प्रदान करेगी, and it will prepare us for the Navaratras. So after Gayatri, so you have got the new kind of energy, new kind of realization when the impurities and ego is taken care of. Then there you become very, very subtle. क्या होता है? आपने देखा होगा कि people keep on complaining that the moment I have started entering into spirituality, people started dancing on my head. Before that, I used to dance. But after coming into spirituality, all other people have started dancing on me, because स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद मुझे लगता है कि सब तो एक ही है, किसके ऊपर क्या बोलूं? एंड आई हैव बिकम अ लिटिल कंपैशनेट टुवर्ड्स एवरीवन. आजकल लोग कुछ कहे तो हम कुछ बोलते नहीं. पहले तो अ बोले तो भी हम आ बोल ही देते थे, या तो कभी कभी अ से लेके क्ष तक भी बोल देते थे. किसी ने अ बोला तो अब अ से क्ष वो बोल देते, हम कुछ बोलते ही नहीं. सो वी हैव बिकम अ लिटिल साइलेंट, काम, क्वाइट, मोर रेजिलिएंट, एंड इवन दयावान बन गए. चलो बेचारा है, गलती से बोल दिया होगा, उसकी कुछ परेशानियां होंगी, कुछ तो कर दिया होगा ना. यू बिकम वेरी सटल, एंड एट टाइम्स पीपल टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट. बोले चलो यह बात कुछ नहीं बोल रहा है, इन्हीं से लेट्स पुल डाउन व्हाट ऑल वी कैन पुल. बट आर वी गोइंग टू अलाउ दैट? नो. Even though you are on the path of spirituality, we will call upon the Devi Bagalamukhi. ना प्रचंड उग्र शक्ति, ये खाली उग्र शक्ति नहीं है, प्रचंड उग्र शक्ति. So what will she do? Now the word that I'm going to use is very, very crucial, बड़े ध्यान से सुनिएगा इसे. She will paralyze the negative forces and grant you victory over your enemies.
आप कुछ नहीं करोगे, शी विल टेक केयर ऑफ इट। इसीलिए हम कहते हैं ये उग्र और तीव्र शक्ति है। एंड एट द सेम टाइम this is vital for neutralizing opposition and gaining control over one's internal and outer life and allowing us for a smooth spiritual journey during Navaratri. अच्छा, क्या सिर्फ शत्रु बाहर है? Is the enemy only outside? And there is a saying, if there is no enemy within, no enemy outside can do you any harm. But if you have an enemy within, you don't need an enemy outside. अगर आपका शत्रु आपके अंदर है तो आपको बाहर की कोई शत्रु की जरूरत नहीं है। तो ये देवी उस शत्रु का भी दमन करने में सक्षम है। शी इज ऑल पावर्ड टू इवन bring the down the demon or the negative energy that is even within us. So इसलिए हम किसकी साधना करेंगे? देवी बगलामुखी की, नॉट ओनली फॉर द आउटर एनिमीज बट फॉर ऑल्सो द इनर ones. Then I will bring out one more thing. Because now you know that Devi Bagalamukhi will do all that thing and you are all powerful over your enemies, again the ego might appear. कि अब मैं सर्वशक्तिमान बन चुका हूं क्योंकि देवी मेरी सुरक्षा कर रही है, अगर किसी ने मुझे कुछ करा या कुछ कहा तो देखना वो क्या करेगी. That's the dialogue that we see. But that ego again will pop up. So in order to control that ego, we will call upon the 13th goddess here, none other than Mahakali. And she is very well known to destroy the ego and attachments. Attachment क्या है? कि अब मेरी साधना बहुत अच्छी है, now I can do something. एक attachment है ना, I can, अब देखता हूँ क्या कौन मेरा कौन क्या करता है. That's ego. So in order to cut down on that, we all have seen Devi. When you look at the image of goddess Kali, she is always holding a head in her left hand, right? एक मनुष्य का सर लेके घूम रही है. What is the reason? The indication is very simple. The indication is nothing else but the cutting down of the ego. That's what she says. बोला मेरे सामने अगर तू ईगो लेके आया, ऐसे ही काट दो. That's the message. And that ego actually is stopping us from our spiritual growth. And it's good if she cuts it down. But are you ready? सोचो, अगर आपका ईगो कट गया, मानो आप ही कट गए, because that's the only thing that is holding you back in every aspect. So Devi, Mahakali. Now, she will also help us to break free from material entanglements and prepare us for the deep spiritual transformation associated with Navratri. जो चीजें हमको बांध के रखी है, the things that we are attached with, the things that we are attracted towards, the things that actually are binding us, बांध के रखी है, उन सारे चीजों से मुक्त करने का मार्ग बताएगी. And this sadhana will help us on cutting down on all those things. And then the spiritual transformation that will happen during the Navratra will be the next level. मैं कहता हूं आज तक आपने बहुत बार नवरात्र किए होंगे, इस बार ये 16 दिन की साधना करके देखो. You will realize the difference what it is. But when your ego is cut down, आप फिर सात्विक बन गए, then something good comes into your life. And in order to bring that good into our lives, on the 14th day, we will call upon Mahalakshmi. So that Mahalakshmi will help us attract abundance, prosperity, and purity. किस बात का abundance, किस बात की prosperity, and किस बात की purity. Now, when we are not entangled in the world, you are free. And when you are free, you receive. धन धान्य से परिपूर्ण हो सकता है, वो चाहे आध्यात्मिक धन हो या सांसारिक.
But here we are more interested into the divine wealth rather than just the wealth of the world. And let her bring whatever she wants to bring for you. So on the 14th day, we will be invoking the goddess Mahalakshmi. Now again, when you have the abundance of things, आपको ज्ञान की जरूरत है. You need intelligence. मानो a lot of wealth has been given to you. If you don't have the right kind of idea, आपके पास बुद्धि सही बुद्धि नहीं है, what will you do? You will waste it all. So in order to balance that part, then we will invoke Mahasaraswati. And Mahasaraswati is the goddess of learning and wisdom. And performing her sadhana, she will sharpen our intellect and ensure that our mind is in state of purity and receptivity to the divine knowledge during Navaratra. जो भी ये सब साधना आप करके जा रहे हो, आपको उसके लिए बिल्कुल आपको शार्प और she will make sure like you are receptive of all that you are going to receive during the Navaratri sadhana. And then finally on the 16th day, you will do the sadhana of none other than Mahishamardini, the destroyer of the demon Mahisashura. Here, in order to understand that why we have chosen the Devi on the 16th day, Mahishasura means he was a Mahishi, that's a buffalo, and an Asura at the same time. Similarly, you as a human, you are also bound by the pashas of this world. सांसारिक मोह माया में बंधे हुए हैं. तो मनुष्य की योनि में तो आ गए, लेकिन पशु की वृत्ति नहीं. So in order to cut down on that pashu vritti, we have called upon the goddess who is known as the Mahishamardini, or the Mahishamardini, the goddess who has killed the demon Mahisasura. That means the pashu bhava that is still within me. Let her kill that pashu and free me for my next journey into the divine realm of mukti, liberation. So that's how the 16 Devis have come upon. And as we all know, she also symbolizes the victory of good over evil, and her sadhana will purify the soul, clear the past karma, and prepare us for the powerful transformation during this Navaratri. Are you ready for the sadhana of these 16 Devis? समय नहीं था. If I would have planned earlier, then we would have done 32. अगर आप सही मायने में देखो तो ये 16 देवी 16 कलाओं को रिप्रेजेंट करती है. The 16 different kind of powers, the 16 different kind of energies, the 16 different kind of realizations, the 16 different kinds of purification. So here, when I'm talking about 16, we also want to realize that 14 bhuvana, the 14 lokas, the 16 devis. What about 2 more? The 2 more are nothing else but your body and mind. So the ye ban gaye 16 bhuvan. So in order to do the sadhana of the 16 realms this time, you are getting ready. So ab tak Navratra kar rahe the. Now this time you are going to do something very, very different. And that's where all these things. So all the things that we have discussed is you will be getting the cleansing of the body and the mind, the spirit, and it will remove all the obstacles and prepare you for the intense sadhana during the Navratra. Then the energy alignment, each goddess embodiment, different aspects of divine feminine. And when we are going to do the sadhana of them, they will prepare us for the higher energy and vibration that we can receive during the Navratra. Then the spiritual readiness, it will also help us to be ready in this realm. And mentally, emotionally, we are all prepared
and energized to channel that divine energies through us. Then the empowerment, the energies that these goddesses are going to instill are the qualities like the courage, that is Durga, wisdom like Saraswati, abundance like Lakshmi, and transformation like Kali, which are the essential to make the most out of Navratri. ये सारी चीजें जब हम करके तैयार हो जाएंगे तब शुरू होगी नवरात्र की साधना. बट एज आई सेड, इट इज ऑल योर्स. 16 डेज की साधना मैं आपको बता देता हूं, आप कर लो. नवरात्र के साधना के लिए आप अपने आप करना चाहते हो, यू कैन कंटिन्यू, और एल्स इफ यू आर स्टार्टिंग द 9 days शक्ति साधना, यू विल बी पार्ट ऑफ दैट. बट द चॉइस विल बी योर्स. Your commitment and my guidance will be for this 16 days in the initial phase. And beyond that, the 9 days will continue. So now a little bit more about the Devis and the mantra that you will be doing. Samay, Kriyakalap, kaise karna. So now we will be discussing again the name of the Devis, the way you will be doing the sadhana, and the mantra of the Devi. So these things will help you prepare yourself in the most amazing way. Saral rakhenge, we'll keep it very simple. As you have seen in the message, it will start from 17th. मतलब मंगलवार के दिन से शुरू होता है. It will go from 17th to the 17th of September to 2nd of October. ये पूरे के पूरे 16 दिन हो जाते हैं. So during these 16 days, you will have to do a very simple process. Very simple process in the sense, अगर आपके घर में दुर्गा की कोई इमेज है, the image of goddess Durga or statue of Durga or anything that is related to Devi, उसकी एक इमेज या कुछ चाहिए. If you want to do a Tivra sadhana, means you want to do the next level of sadhana, remind me. I will guide you at the end of this. But now it's a very basic sadhana that every one of us can do. Okay? Basic sadhana क्या करनी है? What all are the requirements? The requirements are the photo or image of the Devi. Okay? Even there is one more sadhana that you can do with the Shivling. पूजा देवी का है, लेकिन पूजन शिवलिंग का होगा. That's another kind of process, but the problem is ये शिवलिंग की जो साधना है वो रात की साधना है, 9:30 बजे के बाद होगा. So most probably will not discuss that because I see many of you, it is very difficult actually to do that sadhana. लेकिन रात के 9:30 बजे के बाद या तो 11-12 बजे तक, और वो सब साधना अगर शिव मंदिर में बैठ के आप करते हो, शिव मंदिर में आप बैठे हो और देवी के मंत्र से शिव के ऊपर पूजा कर रहे हो, दैट इज लाइक अनदर लेवल. क्योंकि वो एक ही स्थान पे आप शक्ति और शिव दोनों की पूजा कर दोगे. मंत्र देवी का पढ़ रहे हो, पूजा शिव की कर रहे हो. हैव यू एवर डन दैट काइंड ऑफ? आप बोलोगे मंत्र जिसका उसी की पूजा होती है, बट हियर इन दिस पर्टिकुलर केस शिवलिंग जो होता है ना, द थिंग दैट वी स्पीक ऑफ, might be I'm diverting a little bit, but याद आ गया तो बताना चाहता. So there is something in this quantum physics, they speak of the black holes, right? Black hole is something that engulfs everything. जो सब कुछ अपने अंदर समा लेता है, वो ब्लैक होल है. उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लीन हो जाना कहते हैं. मीन्स एनीथिंग दैट कम्स नियर द ब्लैक होल इज एनगल्फ, लीन हो जाता है उसमें. उसी तरीके से लिंग का जो शब्द है वो लीन से आया हुआ है. The entire meaning there itself says that the one who engulfs everything is the linga. जो सारे स्वरूपों को अपने अंदर समाहित कर लेता है, अपने अंदर खींच लेता है, वो लिंग है. That's where we talk about the Shivling. Shivling is again another way of looking at it, is nothing else but a black hole.
which engulfs everything into it. इसीलिए उसे मृत्यु के परे भी कहा जाता है, और द वन जो कालों का काल है, इट engulfs everything into it, जो काल को भी निगल ले, the one that devours even the time and space. So now look at invoking that energy along with the goddess. लेकिन वो तीव्र साधना है. I am not sure like how many people will be able to do that, but one good thing is for the Mahanirvan, there is another sadhana that will be added to that. No, you don't have to go to the temple and do that, but there is another sadhana of Parvati that will be given to you. Okay? So let me see who all can do the night sadhana. I will talk to them later. And those who cannot, आप ये कर लो. Don't worry, कुछ नहीं होने वाला. Like people now will start thinking, oh, so am I losing anything? No, you're not losing anything. Whatever is being given, that is for you. जो आप तक पहुंच रहा है वो आपके लिए है. Clear है? So the requirements are very simple. The first thing that you will need is a photo or the image of the Devi. Second thing, घी का दिया जलाना है. जितना समय आपका मंत्र चलेगा उतना देर तक दिया जलना चाहिए. घी नहीं है तो तेल का दिया जला दो. Okay? You can do the sadhana in the morning, best time. You can do it in the evening, whichever is feasible for you. लेकिन मैं कहता हूं कि आप लोग सुबह ही करो, because इसमें तीव्र शक्तियां हैं. So it is better you do it in the morning hours so that you have that strength and energy to contain that energy. Okay? So morning की साधना कर लो. इसमें क्या क्या लगने वाले हैं? What are the things that you will be needed? Nothing. As I said, a red mat on which you will sit. You have to wear either white, red color dress. Suta means cotton का पहनना. It is much easy to absorb the energy. तो सूती कपड़े पहन लेना. Red color mat, red and white color dress. Then you have a ghee or tel ka diya, and then you will be needed agarbatti, flowers, and little prasad. इतना काफी है. Okay? क्योंकि आप रेगुलर पूजा तो करते ही हो. You will do your regular puja at your place. These are the very simple things. You are already doing it. इसमें कोई ज्यादा सामान लगने वाला नहीं है. One thing you can do is during this Navaratra, or even now, starting from the 16 days, कुछ नहीं करना है. Simply हनुमान के सामने, if you have an image or photo of हनुमान, उसके सामने आपको चमेली का तेल जो आता है, चमेली का तेल, you search it, you find your name. It's a very common name actually. Even movies, वो बचपन से हम सुनते आ रहे, चमेली का तेल लगाया है क्या. So अन्नपूर्णा जी, if you can type उसे क्या कहते हैं, so it would be easy. I can tell it. So वो तेल, like, okay, उससे आपको दिया जलाना है हनुमान जी के. उसमें क्या करना, एक जोड़ा क्लॉव डाल देना, लौंग, 2 लौंग, उसमें सिर्फ 2 लौंग डाल देना. चमेली का तेल, जैस्मिन ऑयल, यस, नाउ यू गेट इट, द जैस्मिन ऑयल. जैस्मिन ऑयल में 2 लौंग डाल देना और वो जला देना. क्यों जला रहे हो, किस लिए जला रहे हो, आपको जानने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड फॉर यू टू इवन नो दैट. क्योंकि जैसे ही कुछ बता दिया जाएगा फिर आपकी लिस्ट लंबी हो जाएगी. एंड आई नो दैट वी आर नॉट intelligent enough to ask for something. So I am doing my work, let them do their part. So you just have to do one thing. अगर घर में हनुमान जी की कोई मूर्ति या फोटो है, उसके सामने जला दो, नो प्रॉब्लम, दैट्स गुड इनफ. ओके? घर में फोटो नहीं है तो एक छोटा फोटो खरीद लो. हनुमान को अगर घर में नहीं रखोगे तो किसको रखोगे? So that's another process that you can do. नो, हनुमान अगर राम के परिवार के साथ है तो भी काफी है. हनुमान does not change as a singularity or with Ram. With Ram he is more powerful, I can say. So if you have any kind of that, so ये हो गया.
बट आपकी साधना कैसे करनी है? सुबह उठ के लाइक इन द मॉर्निंग आवर्स सिट ऑन द मैट, माला लगेगी रुद्राक्ष की, सो देर इज नो प्रॉब्लम विद, इतना ही करना है। आसन पे बैठो, पूजा विधि जो जिस तरीके से आप अपना करते हो कर लो। जब आपकी मंत्र साधना शुरू करते हो, दिया प्रज्वलित कर दो, लाइट ऑफ द दिया, अगरबत्ती जला दो। ओके, अगर पुष्प फिर से चढ़ाना चाहते हो तो एक पुष्प चढ़ा के आप अपनी माला शुरू कर सकते हो। एट द एंड यू हैव टू डू द प्रसाद। प्रसाद का कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक कोई प्रसाद चढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए भी हेल्प किया जा सकता है, बट इट वुड बिकम ए वेरी हेक्टिक टास्क फॉर यू। तो प्रसाद के ऊपर कोई फोकस नहीं, वो नवरात्र में कर लेंगे। सो एनी काइंड ऑफ स्वीट और फ्रूट वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऑफर, इतना ही काफी है। दिशा पूर्व या उत्तर पूर्व। ओके, सो यू हैव टू नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट फेसिंग। क्लियर है? कैसे भी आप पूजा करने के समय पूर्व की दिशा के तरफ ही मुख करके बैठते हो। So there is no change in that as well. Now I will guide you with the Devi ki sadhana and the mantras. You even don't have to worry. I will give you a list, date wise, day wise, then with the mantra. So you don't have to do any hard work. Let me take care of. आप इतना कष्ट से यहाँ बैठे हो, उतना कष्ट हमको कर लेने। We will take care of that part. Okay. So day wise, I will put the dates, day and the mantra and everything. But before that, you have to hear the mantras from me. Okay. And we will go day wise. So day wise, Devi Bhuvaneshwari is the first goddess that we will start with. And as we all know, Devi Bhuvaneshwari is also the one of the Dasa Mahavidyas. And she represents the goddess of creation and the space. And she embodies the universe itself. Goddess Bhuvaneshwari is associated with the cosmic knowledge and represents the energy that creates, sustains, destroys the universe. रचना, संरक्षण एवं ध्वंस करने वाली शक्ति है ये। Now the mantra that you will be chanting, only one mala. Every single day, different mantras, only one mala. If you have more time, do it more. अब 1.25 लाख शिव के मंत्र का जाप करने के बाद आजकल सब साधनाएं छोटी लगने लगी है। बोला एक माला क्या होता है? एंड अर्लियर द सेम पीपल यूज्ड टू हैव ए ट्रबल, ओ माय गॉड, वन माला मंत्र करना है। हाउ वाज द पीपल लाइक आर स्टिल आस्किंग मी, व्हाट, व्हाई ओनली वन माला, कैंट यू गिव एटलीस्ट 1000 malas a day? I said, oh very good, you can do that. मतलब और कोई काम मिलना नहीं है आपको, यू आर कंप्लीटली गॉन इनटू दैट स्पेस, बट इज ओके। If you can do more than one is absolutely fine, but do it in odd numbers. 1, 3, 5, 7, 9, 11, उसके आगे मत जाओ। One is good enough. Again, don't go into a competition, I am saying. One is good enough. But you have the devotion, you want to do more, do for 3, 5. अब पता चला उषा जी ने कल 7 बार कर लिया, मैं आज 15 बार करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। But one more thing is, no sankalp is needed. You are just doing the sadhana. No sankalp, no vidhi, nothing. विधिवत करने लगोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा. That we will anyways do on the Navaratri. In the 9 days, we will do that. So, no sankalp and all those things. The only thing is, the number of jap that you are doing for one goddess should also be consistent with other goddess. अब मैंने इनके लिए एक बार कर लिया क्योंकि मंत्र बड़ा था, तो दूसरे दिन का मंत्र छोटा है तो मैं 5 कर लूं, नहीं. That you have to decide. The first day, the mantra that you are doing should be consistent all the 16 days. Actually, I was thinking of doing some more magic into that, but
आपको देख के दया आ गई। मैंने सोचा था कि पहले दिन जो मंत्र किए हो, दूसरे दिन वो मंत्र और दूसरे दिन का मंत्र, तीसरे दिन उसके पहले वाले 2 दिन का मंत्र और तीसरे दिन का मंत्र, एंड नाउ लाइक दैट। तब कोई एक माला से ऊपर नहीं जाता, बिकॉज डू यू नो बाय द 16th डे यू विल बी डूइंग 17 मंत्रस। इसका मतलब 17 माला हो गई। अगर एक एक माला करते हो, सोचो आपने 5 किया था और किसी ने कहा नहीं नहीं पहले दिन से मैं 11 माला करना चाहता हूं, तो एकदम 17 दिन गए मालाएं आपकी। सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। You simply do one Devi mantra per day. One mala is good enough, but you can increase it to 3, 5, 7, 9, 11, not more than that. Okay. उसके बाद की ऊर्जा संभाल नहीं पाओगे, and it is not needed as well. Clear है यहाँ तक? So the process is known how you will be doing now the mantra of Devi Bhuvaneshwari. Even we have tried to keep the mantras as simple as possible. मतलब देवी के जो सबसे सरल मंत्र हैं उस मंत्रों को लेके आए हैं। थोड़े some mantras might be here and there because उनका सरल मंत्र नहीं मिला, उससे सरलता से नहीं किया जा सकता उस देवी की पूजा। So coming to Devi Bhuvaneshwari, just close your eyes for a moment, listen to the mantra. Om Hreem Shreem Kleem Bhuvaneshwarvay Namaha. Om Hreem Shreem Kleem Bhuvaneshwarvay Namaha. Om Hreem Shreem Kleem Bhuvaneshwarvay Namaha. So this is a very simple thing. Hreem Shreem Kleem. There are 3 Bija mantras. But these 3 Bija mantras, we are invoking the goddess Bhuvaneshwari in that, because she is also the part of the Dasa Mahavidyas, and all the 3 energies travel with it. Om Shreem Hreem Kleem Bhuvaneshwarvay Namaha. So this is a very simple mantra that you can easily do, right? So this is with Devi Bhuvaneshwari. And as I said, सुबह के समय पे कर लो, इवनिंग में कर सकते हो. इफ यू वांट टू ऑफर फ्लावर, देवी भुवनेश्वरी के लिए लाल रंग का पुष्प अगर चढ़ा सकते, रेड कलर फ्लावर, दैट इज गुड फॉर हर. लाल कलर पुष्प नहीं है, डोंट वरी, एनी फ्लावर इज गुड इनफ. So the first Devi was Bhuvaneshwari. Do you remember who is the second? The second Devi that we'll invoke is Devi Matangi. So again, Devi Matangi is the goddess of inner knowledge, speech and wisdom. Antargyan, Vak, evam Buddhi. Devi Matangi is known as the tantric form of Saraswati. सरस्वती की तंत्र युक्त ऊर्जा जो है उसको मातंगी कहते हैं. इवन यू हैव हर्ड ऑफ ग्रीन तारा, राइट? अगर आप महायान बुद्धिज्म में जाओगे या तो बुद्धिस्ट तंत्र में जाओगे तो उसको ग्रीन तारा कहते हैं. बट हियर वी आर कॉलिंग हर एज द तंत्र स्वरूप ऑफ सरस्वती as मातंगी, and she helps gain control over mind and speech. मन के ऊपर और वाचक मतलब बोलने के ऊपर, the things that we speak of, it will bring a control on that. And the mantra that we are going to chant for her, close your eyes for a moment. Om Hreem Aim Shreem Neela Saraswatyay Namah. Om Hreem Aim Shreem Neela Saraswatyay Namah. Here you can use both the words. Open your eyes. यहां आप नमः लगा के कर सकते हो, स्वाहा लगा के कर सकते हो. ओके, so that does not matter. स्वाहा क्यों इस्तेमाल होता है? Namah means I am surrendering all together to you. Swaha means help me bring that clarity so that all these things that are not in my control should be taken care of. If you want to give it in her control, you can use both the words here.
आप स्वाहा भी बोल सकते हो, नमः भी बोल सकते हो. सो आई विल बी पोस्टिंग इट इन दैट वे सो दैट इट इजी. डोंट गेट कंफ्यूज, एक बस है उसमें. आप नमः बोल सकते हो, आप स्वाहा बोल सकते हो. एंड इनको, now I need the help of all the females in this room. Any food that is green in color. अब करेले की सब्जी मत बोलना. सो मैंने एक चीज तो देखा है, आई हैव पिस्ता लड्डू. या इन दिस केस इन साउथ दे गेट दैट ग्रीन कलर स्वीट हियर. अगर आप चढ़ा सको, इफ यू हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ एनी ग्रीन स्वीट, यू कैन. नाउ ग्रीन फ्लावर. ग्रीन फ्लावर कौन सा है बताओ? देखा कोई ग्रीन फ्लावर? नो. हियर in this case, no, you have to put बिल्व पत्र. तो देवी के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाया जा सकता है. या तो बिल्व पत्र चढ़ाओ, या तो कोई ग्रीन कलर का मिठाई, or else anything that is sweet you can still put it, or else green fruits. At least मिठाई नहीं मिला तो ग्रीन फ्रूट तो मिल ही जाएगा आपको. ग्रीन एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, so all these come into the green categories. Okay, so ये हो गई देवी. Offer this green colored food or objects. और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो कोई ग्रीन कलर का अगर छोटा सा कपड़ा भी चढ़ा दो, that also done. ग्रीन कलर का धागा चढ़ा दो, ग्रेप्स, like all the green. कोकोनट का जो वाटर कोकोनट आता है ना, that's also green considered. So कुछ भी you can give it to her, offer her. Then comes the third Devi, the Sodasi or the Tripura Sundari. As we all know, she is the supreme goddess representing ultimate beauty, love and power. She rules over the three realms, क्योंकि त्रिपुरा है वो, and she represents the divine feminine force within the universe. इनका मंत्र है, close your eyes for a moment, just listen to it. Om Am Kleem Som. Om Am Kleem Som. Om Am Kleem Som. So, Saw जो है, saw. You see a little nasal will touch and वो saw बन जाता है. Saw. So that word will be used as saw here. मानो जैसे एक बिंदु लगा दिया गया है उसके. Saw. Okay, so that's the mantra of Devi. And you can do again, as I said, one mala is good enough. And as especially if we see that it is falling on the third day, Tuesday, Wednesday, Thursday. Okay. Do one thing, especially on this day, कर्पूर जला के आरती करो. Thursday and Friday, that is the third and the fourth day, ये 2 दिन के लिए कर्पूर जला. If you want to do for 16 days, no rules. But if you do that for the third and the fourth day, that is the Thursday and the Thursday and Friday. Okay. And even for this Devi, you can offer kumkum or anything that is red in color. लाल कलर का फिर कोई फ्लावर हो गया, कपड़ा हो गया, लाल सिंदूर हो गया, anything that you can offer her. Okay. Then comes the fourth Devi, Narayani. This form of goddess is the form of goddess Lakshmi, representing strength and wealth. And as we all know, Narayani emerged from the body of Lord Vishnu and is associated with prosperity and protection. वो विष्णु की शक्ति अवतार है. शक्ति अवतार तो नहीं कहते, शक्ति स्वरूप है वो. So when she
That's the feminine energy of Vishnu, Narayani. So Narayan ke feminine energy, Narayani. Now please close your eyes for the mantra. Very simple, small mantra here. Om Narayanyay Namaha. Om Narayanyay Namaha. Om Narayanyay Namaha. So देवी का नारायणी स्वरूप जो है ओम नारायणी है नमः. दिस इज द मंत्र फॉर देवी नारायणी. इनको आप चंदन चढ़ा सकते हो. चंदन बहुत प्रिय है इनको. सो आपके घर में जो चंदन है, यू कैन ऑफर चंदन टू हर अपार्ट फ्रॉम द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स दैट यू आर ऑफरिंग ऑन ए डेली बेसिस. ओके. जैसे चंदन का कलर का होता है चंपा. एक चंपा है जो इट्स जस्ट लाइक द कलर ऑफ द चंदन. इफ यू गेट इट, आई थिंक सम पीपल हैव बिकॉज दे सेंड मी दैट फ्लावर. तो हमारे घर में वो पुष्प भेजते हैं, तो हमको पता है कि उनके घर में या तो आसपास कहीं वो पुष्प है. जिनके पास है वो चढ़ाए, नहीं है यू डू द नॉर्मल रेगुलर पूजा विथ एनी फ्लावर्स, कुछ प्रसाद चढ़ा दो, लेकिन चंदन जरूर चढ़ा देना उस दिन. देन कम्स आफ्टर नारायणी वी कम्स टू राजराजेश्वरी. देवी राजराजेश्वरी और ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है is the queen of the universe, representing the divine love and bliss. She has destroyed the demon known as the Bhandasura, and she has restored the cosmic balance with her energy. So now the mantra of Rajarajeshwari. This is going to be a little elongated mantra. थोड़ा मंत्र लंबा होने वाला है, बट इससे छोटा मंत्र नहीं है. Please close your eyes. ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कामेश्वरी कल्याणी कामेश्वरी नमस्तुते. ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कामेश्वरी कल्याणी कामेश्वरी नमोस्तुते. ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कामेश्वरी कल्याणी कामेश्वरी नमस्तुते. ओपन योर आइज. अगर संभव हो पुट लोटस फ्लावर. इनके लिए अगर आप कमल का पुष्प चढ़ा सको, क्योंकि वो राजराजेश्वरी है. कमल का पुष्प अगर चढ़ा सको, अगर मिले तो. अगर नहीं मिले, एनी काइंड ऑफ फ्लावर इज गुड. और द बेस्ट पार्ट, जैसे अभी कमलेंद्र जी ने किया, उनको देख के समझ में आ गया कि वो क्या कर रहे हैं. सो लेट मी टेल यू, अगर ये सारे वस्तुएं नहीं मिलती इन द फिजिकल फॉर्म, विद इन यू एवरीथिंग इज अवेलेबल. आप मानसिक स्वरूप में से पूरा ब्रह्मांड चढ़ा सकते हो उसके ऊपर. पुष्प क्या है? सो इवन यू आर होल्डिंग वन फ्लावर इन योर हैंड, if you close your eyes and call upon the divine and say, Ma, I just have this, but I'm offering you this as that, then I feel like you will be more blissful in that space. और पुष्प का चढ़ाने का भी एक विधि है. Oh my God, shall I? Okay. जब आपकी माला समाप्त होगी, when you are completing your mala, hold the pushp in the mrigi mudra. You see, the middle, the ring finger and the middle finger are going and touching the thumb. मृगी मुद्रा, it looks like a deer, right? इसीलिए इसे मृगी मुद्रा कहते हैं. So you hold the flower in between this. ऐसे hold करोगे आप इसे. And then you keep it near your heart. आप अपने हृदय के पास रखोगे. और तब देवी के बारे में सोचते हुए, thinking about the goddess,
because you have already completed the mala. As if you are offering the entire mantra to the goddess, keep it near your heart, and then finally keep it at the feet of the goddess. By listening to this, you feel like this. When you do that, you think what happens. Ekdam, you will absolutely feel a connection with that divinity. Okay. So we have reached till which day? Raja Rajeshwari. The fifth day. Now the sixth day is Jaya Durga, the victorious form of Durga, symbolizing triumph over good over evil. And as we talked about, she came to kill the demon Mahisasura and represents the strength of the protection. इनका मंत्र है, प्लीज क्लोज योर आइज, बहुत सीधा सरल मंत्र जो आप सब करते होंगे. ओम दुर्गाय नमः. यहाँ पे दुम दुर्गाय नहीं लग रहा है, ओनली ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः. दिस इज द मंत्र ओम दुर्गाय नमः. इनके ऊपर भी आप लाल रंग का जो हिबिस्कस फ्लावर होता है, मंदार का फूल, गुड़हल का फूल जिसे कहते हैं कुछ लोग मंदार कहते हैं और कुछ लोग उसको हिबिस्कस कहते हैं, अगर मिले तो चढ़ाओ. दैट वुड बी वेरी गुड. One more secret that I just wanted to share is these 16 days sadhana that you are doing before Navratra was done by the devatas to invoke goddess Durga. उन्होंने भी 16 दिन की साधना की थी नवरात्र में देवी को प्रकट करने के. वो विधि आप कर रहे हो. और उन्होंने भी जिन जिन देवी के साथ पूजा आरंभ किया था, आप लोगों को भी वही देवियों के बारे में बताया गया. All these goddess that you are getting invoked with are the same goddess that all the divine beings or the gods did for 16 days sadhana in order to invoke the Devi. If that looks small, even Ram, before going to the war, he did 16 days sadhana and then he went to the war. So there are many more instances that are into it. But I think these two are very, very important. Why you are getting to do that sadhana. आप तक ये साधना कैसे पहुंच गई? That's where I say might be you people are enhancing yourself into some realms. So Om Dum Durgaye Namah हो गया. And as I said, hibiscus flower चढ़ाना है. And the seventh day, Ugra Tara, the fierce form of goddess. Tara is known for her protective and destructive nature. Now, जैसे उग्र तारा, तारा मतलब माँ. माँ अपने बच्चे को रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकती है. She can take the fiercest form. And that's what Ugra Tara is all about. She has the fierce energy to protect you and protect her devotees from the enemies and obstacles. The mantra that we'll be chanting for her, please close your eyes. Om Hreem Streem Hum Phat. Om Hreem Streem Hum Phat. Om Hreem Streem Hum Phat. Open your eyes. इस देवी को ब्लू कलर के फ्लावर्स, अपराजिता, इनको प्रिय. नीले रंग के कोई भी पुष्प इनको अत्यंत प्रिय. If you get good, or else do some alchemy with your own devotion.
hold the flower, convert that with your alchemy of devotion and put it that. That will still work, right? And then you become an alchemist also, who knows the divine way of converting one thing into another. Then comes the 8th day, Harachandi. Harachandi is also again a fierce aspect of goddess Durga. Especially her worship is done in Odisha, in our space, because there is a temple of Harachandi temple. And she grants success and protection. And she has both the destructive power to destroy your enemies and the nurturing aspect of the goddess. Please close your eyes for the mantra. Om Hreem Ram Harachandikaya Namah. Om Hreem Ram Harachandikaya Namah. Om Hreem Ram Harachandikaya Namah. Open your eyes. इनके लिए भी लाल रंग का पुष्प, any red color flower is good. Turmeric you can put near her feet also. जो साबुत turmeric होता है, if you have it. And this is very very close to her. So अगर आप हल्दी चढ़ा पाओ, वो सूखा हल्दी होता है ना, not that powder one, सूखा हल्दी जो होता है, अगर वो आप चढ़ा सको, that's good enough. Then what to do with that haldi? Cook your food with that. जब खाना बनाते हो ना, चावल बनाते हो, उसमें डाल दो. उसके बाद once the energy is absorbed into the food, you can discard that. Okay. Then comes 9th Banadurga, or the forest dwelling goddess. And majorly, like, she is actually worshipped more in the tribal traditions, representing protection and protection from natural surroundings. मतलब आसपास में जो भी सराउंडिंग है, उनसे सुरक्षा के लिए देवी का पूजा करते हैं वो लोग, वन दुर्गा का. She is also considered as the guardian deity who protects forest and wildlife. अब कुछ दिन पहले हमने बताया था कि वन दुर्गा का जो स्वरूप है, वन देवी, वो कौन है. So if you remember that, if not, short memory. Now the mantra, because she is also the same form of Durga, the mantra remains same. Please close your eyes. Om Durgaya Namah. Om Durgaya Namah. Om Durgaya Namah. This is the mantra. Open your eyes. इनके पास आप चावल, गेहूं, anything that is related to the राइस कैटेगरी, वो आप चढ़ा सकते हैं. इनके पास अक्षत बना के चढ़ाओ, नो प्रॉब्लम, दैट्स गुड इनफ, राइट. एंड इनके पास एक्चुअली जो जंगली पुष्प आते हैं, जो किसी देवी देवता के ऊपर नहीं चढ़ाते. देयर आर सर्टेन फ्लावर्स यू जस्ट सी बट यू डोंट पुट इट एट द गॉड्स एंड गॉडेसेस. इनके ऊपर सारे चढ़ सकते हैं, बिकॉज शी इज द देवी ऑफ द फॉरेस्ट इटसेल्फ. And because she is the Devi of the goddess, she has accepted everything as is. So इनके ऊपर कोई भी पुष्प चढ़ाया जा सकता है. Okay. Then comes Tripur Bhairavi. Bhairavi is the fierce goddess of destruction, known for her intense energy in removing ignorance. Tripur Sundari का ये है Tripur Bhairavi. She is the consort of Bhairava and represents the terrifying aspect of the Supreme Mother. भयंकर स्वरूप दिखाना जो कहते हैं. प्लीज क्लोज योर आईज. मंत्र इज वेरी सिंपल. ओम त्रिपुराय भैरवीये नमः. ओम त्रिपुराय भैरवीये नमः. ओम त्रिपुराय भैरवीये नमः. ओपन योर आईज.
For her, again, the red color flowers, red kumkum is something that she can be offered. Then comes the 11th one, that is Devi Gayatri. Gayatri is the personification, or Gayatri represents the essence of the Vedas. जैसे हम जानते हैं कि देवी गायत्री के पंचमुख देवी है, who imparts wisdom and knowledge about the 5 parts of creation. We all know the mantra of Devi Gayatri anyways. Om Bhurbhuva Swaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Devo Yona Prachodayat. So you can do a mantra jap of the Gayatri mantra. इनको कुछ नहीं चढ़ाना है, जल चढ़ाना। पुष्प चढ़ा सकते हो. If you really want to give something, pour some water in front of her while chanting the last. जब मंत्र हो गया, last में hold it near your heart and then offer it at the goddess. So that is Devi Gayatri. Then comes Devi Bagalamukhi. Devi Bagalamukhi is, as we all know, is a tantric goddess who paralyzes the enemy, and she is also part of the Das Mahavidyas, symbolizing control over speech and destruction of adversaries, means destruction of enemies. She is always invoked to defeat enemies and gain control over situation. जब situation आपके कंट्रोल से बाहर चला जाता है तो देवी बगलामुखी की आराधना की जाती है. Please close your eyes for the mantra. Om Krim Kalikaya Namah. Oh, sorry, just hold on, just hold on. Not this, not this. This is for Kali. Bagalamukhi mantra. Om Hlim Bagalamukhi Sarvadustanang Vachang Mukhang Padam Stambaya Jiva Kilaya Buddhi Vinashaya Hlim Om Swaha. Om Hlim Bagalamukhi Sarvadustanang Vachang Mukham Padam Stambaya Jiva Kilaya Buddhi Vinashaya Hlim Om Swaha. Om Hlim Bagalamukhi Sarvadustanang Vachang Mukham Padam Stambaya Jiva Kilaya Buddhi Vinashaya Hlim Om Swaha. Now this mantra is a long one, but by reciting this mantra you already know what all you are invoking. आप किसी को स्तंभित कर देते हो, किसी की बुद्धि नाश कर देते हो, किसी का मुंह बंद करवा देते हो. कैन यू सी ऑल द थिंग्स आर देयर इन इट. सो इसीलिए बहुत डेंजरस मंत्र माना जाता है इन सबको. बट डोंट डू इट विथ एनी काइंड ऑफ इल इंटेंशन. सिंपली आप साधना कर रहे हो इसलिए करो. किसी के लिए कर रहे हो, किसी के ऊपर कर रहे हो, ये जरूरत नहीं है आपको. यू आर जस्ट डूइंग द साधना ऑफ देवी. लेट हर टेक केयर ऑफ द थिंग्स. इनको येलो कलर के फ्लावर्स बहुत पसंद है. एनी फ्लावर दैट इज येलो इन कलर. ठीक है. देन कम्स महाकाली. महाकाली, as she is known as काल के परे जो है वो काली है. The goddess who is beyond time and who even destroys time, representing the death of ego. She is depicted as standing on Shiva, symbolizing her dominance over time and space. शिव के ऊपर एक पैर पे जो खड़ी है वो है महाकाली. इसका मंत्र, प्लीज क्लोज योर आईज. ओम क्रीं कालिकाय नमः. ओम क्रीं कालिकाय नमः.
ओम क्रीं कालिकाय नमः। इस देवी की पूजा, आंख खोल दो, आपके लिए नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ सरल उपाय से पूजा करोगे, क्योंकि इसकी पंचमकार से पूजा होती है। Because you are Sattvic people, because you are doing puja at your home, you simply offer anything as in the form of a sweet, and any red color flower is good for us. लाल रंग का पुष्प, कोई भी मिष्ठान, नहीं तो इसके ऊपर मद मदिरा सब चलता है। That's not for the सात्विक स्वरूप of the puja. Then it will be coming with the 14th day, Mahalakshmi. Mahalakshmi, the goddess of wealth, prosperity, and abundance. As we all know, she emerged from the milk, ocean of milk during the churning by the goddess. जैसे हमारा जब अमृत के लिए जब देवी और देवता और दानव एक साथ मिलके जब churning कर रहे थे, the ocean, then she came out. She is associated with fortune and well-being. मंत्र बहुत सरल है, please close your eyes. ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। Again, if you have lotus flower, great, or else any kind of sweet and fruits will be good. Then comes the 15th Mahasaraswati, the goddess of wisdom, knowledge, and arts. She is also related to purity, wisdom, and clarity. Please close your eyes. इनका बीज मंत्र ऐम है, तो इसलिए ये मंत्र में हम जोड़ते हैं ओम ऐम महासरस्वत्यै नमः। ओम ऐम महासरस्वत्यै नमः। ओम ऐम महासरस्वत्यै नमः। And we all know, like, as she dresses up, white flowers are her main liking. कोई भी सफेद पुष्प चढ़ा सकते हो, कोई भी सफेद मिष्ठान चढ़ा सकते हो उनके पास. So that is something that you can do. Then the final Mahisamardini, Durga, in her form of slaying the Mahisasura. As we all know, like, she defeated the Mahisasura in the fierce battle, symbolizing the triumph of good over evil, and that is nothing else but the Durga Puja that we will be doing in the Navaratras. Right? इनका मंत्र, प्लीज क्लोज योर आइज. ये इनके लिए हम नवाण मंत्र यूज करेंगे. ऑल द पीपल दोज हु ऑलरेडी डू द नवाण मंत्र, लेकिन इन नवाण मंत्र को हम दसाण मंत्र कर रहे हैं बिकॉज वी आर एडिंग ए ओम टू दैट, सो दैट यू कैन कंटेन द एनर्जी विद इन इट. नवाण मंत्र के बारे में किसी दिन एक सेशन छोटा सा बता दूंगा आपको, हाउ एंड वाई नवाण मंत्र का मीनिंग क्या है, उस मंत्र का इतना इंपॉर्टेंस क्या है. सो विल टॉक अबाउट दैट समडे. तो नवाण मंत्र को हमने दशाण मंत्र कर दिया है, जैसे हमने ओम इसके सामने लगा दिया है. तंत्र युक्त विधि से जो करते हैं वो ओम नहीं लगाते, जो मंत्र युक्त विधि से करते हैं वो ओम लगा देते हैं. ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे. ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे. ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे. ओपन योर आईज. यहां जब आप ओम लगाते हो तो इसमें ब्रह्म को जोड़ देते. एवरी वर्ड इन दिस इज a बीज mantra and it represents a different deity. So किसी दिन नवाण मंत्र के बारे में एक छोटा सा सेशन कर लेंगे. So you all know, especially जो सब दुर्गा सप्तशती करते हो, you are very easily you keep on reciting this, chanting this mantra anyways. Okay. और देवी के लिए आप वही again red color flowers are her. She likes the red flowers. You can put that, and any other sweets that you can put for. So these are
the 16 Devis, the 16 days sadhana that you will be starting from 17th, that is from Tuesday onwards. So मुझे लगता है कि if these things have appeared in front of you, you should not let this opportunity go. Even though there are restrictions for you, मानसिक रूप में ये पूजा की जा सकती है, especially for females. If you go into the cycles, need not worry. Still, you can continue the sadhana as per the day in a mansik way. Okay. Traveling, mansik. So now, these are the 16 Devis, they are gunas, why you should do, who all have done it for the past 16 days before you. The mantras, the vidhis, everything has been told. If you have any questions, now raise your hand. I will clarify the questions and provide the answers, and then we can close this session. And at the same time, even I have talked with our young brigade, those who have started another channel for us, the YouTube channel. All these things are going to be posted as 16 shorts. Every day, कौन सी देवी क्या मंत्र, कौन सी देवी क्या मंत्र, कौन सी देवी क्या मंत्र. उनके लिए बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, बट मैंने उनको कहा तुमको करना ही है, मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे. And I feel like they are really doing a good thing. Within that, what we saw is within that 3 posts that they have done, they have already crossed the 1,000 mark. So they were celebrating yesterday. I said, good job. So, lage hue hai bachche. So let's support them, help them in any other possible. At least you can go and subscribe to that channel. Those people will doing means you won't believe. At times we start editing a video at 9:30 in the night, and it goes up until 2:30, 3 o'clock in the night, and they complete it and they only sleep at that time. That's the way they are dedicated now. So we sit, we decide, okay, so this is the topic, this is how it should, and the magic is all being done by these people. So looking at that dedication, I am more interested that, okay, so if you are really creating that, let me give you some amazing contents. Then after that, we are coming up with the Ashtakali, the 8 kind of different Kalis, and we will be providing the videos for that. So by looking at their devotion, dedication, I think like मैं कहीं कम ना पड़ जाऊं. Just literally like waking up till 3 o'clock and posting it, and वही है ना, that hard work we cannot see like what all they are doing. But I just ask all of you to bless them from your side. ना आशीर्वाद दे देना उन बच्चों को, कैसे भी उसका आशीर्वाद होगा ही होगा, नहीं तो कर रहे हैं कैसे. So all of us from this group only, and I'm thankful to all the parents, those who have allowed their kids to do this work for us. So thank you everyone. Okay, now the questions. Sudha ji, I was expecting you. इसीलिए मैंने कहा कि प्रश्न चाहिए. प्रणाम गुरुदेव. प्रणाम सुधा जी. एक रिक्वेस्ट है, प्रश्न तो नहीं है गुरुदेव, एक रिक्वेस्ट है. जैसे हाँ जी. आपने देवी बगलामुखी का मंत्र दिया, ओके, तो काफी लंबा है और उसके एक भी शब्द में कुछ गलती नहीं होनी चाहिए. ओके, जहाँ तक तो बिल्कुल. इसको थोड़ा और कुछ इसमें हो सकता है, थोड़ा सरल हो जाए, थोड़ा देखता हूँ, आई ट्राई. उसमें एक ही चीज कर सकते हैं सुधा जी. बगलामुखी के जो बीज मंत्र में देखता हूँ, बीज मंत्र जोड़ के ओम बगलामुखे नमः कर सकते हैं उसको. ठीक है. दूसरा चीज, whenever you have a doubt whether you can chant the mantra or not, जब भी कभी भी आपको कोई मंत्र जाप करने में आपको शंका हो, एक ही काम करना है, मंत्र को मुख से नहीं बोलना है, अपने अंदर चला लेना. So when you speak, वो दूषित हो सकता है. जब आप मन के अंदर चलाते हो, वो दूषित नहीं माना जाता. ओके,
सो दैट कैन बी समथिंग दैट यू कैन डू। अगर सुधा जी आपने कहा है मैं मंत्र छोटा करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज दोज हु कैन डू इट। सो आई विल डू वन थिंग, मैं एक छोटा मंत्र उसके साथ जोड़ देता हूं, आप दोनों में से कोई एक कर लो, क्योंकि सुधा जी कुछ लोग हैं जिनको ये इसकी जरूरत थी अब। ओके, तो दोनों मंत्र दे देते हैं, जो आपके हिसाब से हो आप वो कर लो। मंत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल गेट द सेम काइंड ऑफ बेनिफिट, इट्स ऑल अबाउट इन्वोकिंग द गॉडेस। ठीक है, बिल्कुल आपने जैसे कहा है बिल्कुल कर देंगे। दूसरा गुरुदेव ये है, जैसे आपने ये बताया, जैसे पहले दिन मान लो मैंने 3 मालाएं की, तो ओके, अगले दिन दूसरी देवी की और प्लस पहली देवी की वो कंटिन्यू करनी है। अच्छा, नहीं नहीं वैसा उस नहीं दिन की करेंगे। उसी दिन, हाँ नहीं ठीक नहीं, है। वो इसीलिए मैंने मना किया ना, जिस दिन का है उसी देवी का करो, नहीं तो 16th डे पहुंचते पहुंचते आपका दिन भर बैठ के एक पूरा चौघड़ा खत्म हो जाता है, आप वही मंत्र करते रहोगे। तो लेट अस ओनली स्टिक टू 1 डे 1 देवी, 1 डे 1 देवी। तो और गुरुदेव उसके एक, बाद भी सुधा जी, अगर जिस तरीके से मैं चक्रविधि का मंत्र बोल रहा हूँ ना, जैसे मैंने कहा पहला दिन का मंत्र दूसरे दिन का, वो चक्रविधि के हिसाब से चलता है। इट बिकम्स लाइक ए चक्र, इट रोटेट्स, and when it rotates it creates energy, and that energy will be so vibrant and so huge, कंट्रोल करना मुश्किल होगा लोगों को। तो उसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है, जो आपने अभी बताया था गुरु मंत्र की 4 माला करनी है, तो ओके हमारी वो प्रोसेस तो खत्म हो गई। अब ओके, हमें, जैसे ऑड और इवन में किया जाता है, जैसे 3 मालाएं करनी, 5 करनी, ठीक अब हम गुरु ठीक। मंत्र की 4 मालाएं करें या 3 या 5, ऐसा कुछ करें कि उसमें वैसे ही कोई कंटिन्यू करें? हाँ, कोई उसमें नियम कुछ नहीं है, नहीं। उसमें कोई नियम नहीं है। वो तो थैंक वो यू। हाँ, देखिए दैट गुरु तत्व को इन्वोक करने के लिए जस्ट दैट एनर्जी एंड दैट मंत्र दैट हैव बीन गिवन टू यू, आप वो मंत्र कर रहे हो, बट नाउ वो मंत्र बेस बन गया, राइट? बियॉन्ड दैट बेस नाउ वी आर क्रिएटिंग द, बिकॉज वो बेस है उसके वजह से हम दूसरे मंत्र कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको कंटिन्यू कर सकते हो, रूल वैसा कुछ नियम लागू नहीं होता है उसमें। 4 भी कर सकते हैं, 5 भी, 3 भी, मतलब कुछ भी उसमें वो नियम बिल्कुल, नहीं है। उसमें नियम लागू नहीं होता। थैंक यू। ओके सुधा जी। अदिति जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कल आपका बर्थडे है? हाँ महादेव। अच्छा, तो वो आपने कुछ दो चीजें बताई थी कि एक लास्ट में कुछ याद करवाना है, आप बताने वाले थे, right? इससे, तो और जाने नहीं दूसरे, देंगे। और दूसरा ये पूछना था महादेव कि जैसे शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाने का आप बता रहे थे, तो वो तो रात को 9:30 बजे के बाद बोले ना आप, तो सेम मंत्र से करना है ये, या घर के शिवलिंग को नहीं कर सकते? रात में? तो फिर आप अब बोले रात ना आप वैसे। रात में कुछ करो ही मत, सुबह ही करो पूरा। बट आपने कहा ना महादेव कि शिवलिंग के ऊपर नहीं, पानी चढ़ाना। दिन में चढ़ाओ ना, रात में मत करो। मैं वही बोल रहा हूँ कि वो साधनाओं में मत उतरो आप रात में। रात में उतर जाओगे तो फिर मेरी साधनाएं पूरा बदल दूंगा मैं। ओके, ठीक है। तो फिर ये पूजा के टाइम में ही जल चढ़ा के फिर मंत्र जाप करना है, बिल्कुल, या फिर बाद में? एनीथिंग इज ओके। और 2 बार चढ़ा दी तो तुम्हारा क्या जा रहा है? पानी खत्म तो नहीं हो रहा ना? यू कैन पोर इट ट्वाइस। नाउ द ओनली थिंग दैट यू आर आस्किंग मी, मैंने कहा था कि और एक चीज जो ऐड किया जा सकता है, माला जब जाप कर रहे हो, लेट्स से यू आर डूइंग 1 माला, 108, 108 माला कर सकते हो, या तो 108 पुष्प रख सकते हो। यू कीप 108 फ्लावर्स with every mantra jap, you do the same, you bring it close your heart, offer it। अगर आप 108 इस तरीके से करते हो, हृदय के पास रख के कर सकते हो, लास्ट में 108 के बाद मैंने कहा कि और एक पुष्प चढ़ाना है, राइट? इन दिस केस द लास्ट फ्लावर, दैट इज द 109th फ्लावर, इट विल गो फ्रॉम द गुरुरंध्र, मीन्स आपके त्रिनेत्र भ्रुकुटी से टच होके उसके बाद देवी के चरण में जाएगी। दैट्स द ओनली रूल। आप माला से जाप कर लो, या तो 108, मतलब एवरी मंत्र दैट यू आर चैंटिंग यू आर पुटिंग ए फ्लावर। तो रोज आपको 108 108 108 फ्लावर जुगाड़ करने पड़ेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि माला से कर लो,
क्योंकि एवरी डे इट वुड बी डिफिकल्ट टू ब्रिंग दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स करना मुश्किल हो जाएगा. अब मैं बोलूं कनियर के फूल 108 कहां से लेके आऊं मैं? सिल्वर फ्लावर्स, इफ यू हैव 108 सिल्वर फ्लावर्स, व्हाई नॉट? बिल्कुल कर सकते हो. ओके मैम. Jai Bharat ji, I don't do Guru Mantra. Which form base as you? This is my, okay, just let me help you. ये भगवान 108 गोल्ड फ्लावर्स, हाँ बिल्कुल. सोना चांदी हीरा मोती जो चाहे चढ़ा दो भगवान के ऊपर, कोई बात नहीं, बिल्कुल कर सकते हो. Then I want to take some more. Okay. I didn't do Guru Mantra, which form base, as you just mentioned. This is my first session. Okay, Jai Bharat ji, you can do one thing. जो गुरु मंत्र के हिसाब से आप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जो बेसिक मंत्र है उसे आप एक माला कर सकते हो, या तो अगर आप ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना गुरु मान के, जो कि दत्तात्रेय के स्वरूप हैं, उनका मंत्र कर सकते हो, द्राम, दैट इज DRAM. द्राम मंत्र का एक माला करके उसके बाद आप ये साधना कर सकते हो. दैट इज व्हाट योर गुरु मंत्र कैन बी. क्योंकि आप किसी गुरु या किसी परंपरा से दीक्षित नहीं हो, तो आप शिव ब्रह्मा और विष्णु को अपना गुरु मान के ये कर सकते हो. अगर द्राम मंत्र कर सकते हो तो भी चलेगा, नहीं तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु मंत्र जो है उसके साथ भी आप कर सकते हो. ओके, सो व्हाट आर द नेक्स्ट क्वेश्चंस? गोल्डन फ्लावर, सिल्वर फ्लावर्स आर डन. Traveling, as I said, you can do it in the Mansik route. Okay. Any other questions, or is it clear? It's clear. So I know I am putting a lot of responsibilities on your shoulders, but responsibility is also kept on the shoulders that are strong enough. And I believe, like all these years you have been sitting here, now you should be strong enough to do all these things. Okay. So this time हम सबके लिए नवरात्र 9 दिन का नहीं, 25 दिन का. It's all just like pre-marriage arrangements that you do, pre-ceremony arrangements you do. This time we are doing the same thing. Last moment में कोई भागम दौड़ नहीं रही. It is no rush at the end. We are all prepared. We are all set. And within the 16 days, may the Sola Kala of the Devi slowly enter into you. Okay. So with this blessing, with this prayer, with this, I think like she will be there to guide you. Because if she was not ready, then why she brought this idea to even speak of the 16 days. और ये जो 16 दिनात्मक पूजा होता है, ये सिद्धों के द्वारा की जाती है. And when this is coming to you, may you also get into that realm. So with this, yes, हनुमान का जो दिया है अदिति जी, वो सुबह ही जलेगा. और उसमें 2 लौंग, जैस्मिन ऑयल एंड 2 क्लव्स इन दैट. दैट्स गुड इनफ. कुछ नहीं, नमस्कार कर देना, बोला जो करना है तेरा. You know what to do and why this was given, so you take care. ठीक है. So sorry I could not take the Wednesday session, but I think this has covered the entire year session now. शायद इसको ही हम 16 सेशन कर सकते थे, बट ओके. कमलेंदर जी प्लीज अनम्यूट. प्रणाम गुरुदेव. प्रणाम. गुरुदेव, प्रश्न ये 16 दिन से नहीं है, आगे आने वाले 9 दिनों से है. ओके. उसमें मेरा प्रश्न ये है कि आप सेशन जो लेंगे उस टाइम के, वो मॉर्निंग सेशंस लेंगे या इवनिंग लेंगे? क्योंकि मेरे को मुझे लगता है कि मॉर्निंग ही करना पड़ेगा इस बार. Okay. क्योंकि इवनिंग में मैं कुछ शेड्यूल्स मेरे देख रहा हूँ, देयर विल बी सर्टेन वर्क दैट आई हैव टू कंप्लीट इन द नाइट. कुछ दिन शायद देर हो सकता है, एंड आई डोंट वांट टू मूव आउट फ्रॉम माय कमिटमेंट ऑफ दोस 9 days. Okay.
सो इसलिए वी विल डू इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, 5 बजे से शुरू करेंगे, 7 बजे के अंदर समाप्त कर देंगे, सो दैट एवरीबॉडी गोज बैक टू देयर वर्क एंड ओके। नथिंग इज डिस्टर्ब्ड इन दैट। जी जी, बस यही एक वो था, क्योंकि मैं हाँ, क्योंकि मैं वही सोच रहा था रात में करने के लिए, लेकिन मैंने देखा कि कुछ दिन शायद मुझे लेट हो जाएगा कुछ चीजों में, सो दैट आई डोंट वांट टू ब्रिंग द टाइम अप एंड डाउन, और एल्स इट वाज एक्चुअली इजी फॉर ऑल ऑफ अस टू डू इन द नाइट, बट ठीक है, जी we'll be doing in the morning itself. जी, Okay, धन्यवाद धन्यवाद। and this time US people are lucky, they will actually do in the night. Okay. जी जी। So anything else, any questions? Okay, chaliye Kamlendra ji, and I think like just let me check the questions if any. Should we keep the daily Hanuman for Hanuman? Yes, कार्तिकेय वो दिया आप रोज जला सकते हो for those 25 days, it's good. और कैसे भी आपने एक साधना की है उसकी, so you continue lighting up that diya, that will be good for you. मंदिर में भी जाके जला सकते हैं, बिल्कुल जला सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में जले तो और अच्छा है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली वो आपके गृह के लिए कुछ दिया गया है। देन ओके, बहुत बहुत ओके, आभा जी अनम्यूट। राम गुरु जी। प्रणाम आभा जी। गुरु जी, क्या चमेली के तेल की जगह घी का दीपक नहीं जगा सकते हनुमान जी का? नहीं नहीं, हनुमान के लिए स्पेसिफिकली ये समय पे यही चाहिए, इसीलिए हमने ये बोला। अच्छा अगर घी अच्छा। का होता तो हम बोलते घी का जला दो, कुछ 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 रीजन से कहा गया है दिस नहीं टाइप। नहीं, ठीक, ठीक है ठीक है। अच्छा गुरु जी, जैसे क्रमबद्ध तरीके से पूजा होती है ना, तो क्या ये चैंटिंग हमको पहले करनी है या अपनी पूरी पूजा करने के बाद पूरी पूजा करने के बाद कर लो, कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो बेसिक जो डेली का जो रिचुअल्स है, जो आप रोज जो पूजन करते हो, पंचोपचार हो, हम्म। षोडशोपचार हो, जिस तरीके का भी उपचार आप रोज करते हो, उसको समाप्त करने के बाद ये करो, ताकि क्या हो जाएगा, आपको सारे विधियों को करना ना पड़े इस पे। नहीं तो फिर यहाँ पे आपको आचमन से लेके, अंग शुद्धि से लेके, आसन शुद्धि से लेके, वो सारे चीजें फिर से करनी पड़ेगी, तो वो अच्छा अब जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल जैसा आप अपना उपचार जैसे करते हो वो करने के बाद वहीं पे ये साधना शुरू कर दो। अच्छा, हनुमान जी का दीपक तो डेली जलाना जगाना है, लेकिन क्या हाँ ये मंत्र करने से पहले देवी का दीपक भी घी का जगा के रखना पड़ेगा? बिल्कुल, इसीलिए देखिए, कभी भी मंत्र शुरू करने से पहले दिया जला दीजिए, तो वो आपका हाँ, साक्षी दीप बन जाता है। वो तो हर क्योंकि पूजा में ही जगाना पड़ता है, वो हाँ तो हर बिल्कुल, पूजा में लगता है। तो मैं क्योंकि इसलिए पूछ रही थी कि हनुमान जी का जगा दिया, फिर देवी का भी एक घी का दीपक जगा के रखते हैं अलग से। बिल्कुल, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि शायद, अच्छा शायद मैं मिस कर गया, एवरी डे एक घी का दिया तो जलेगा, घी का हो या तो तेल का हो, विच एवर इट इज, ओके। आपके मंत्र शुरू करने से पहले दिया जलेगा, एंड इट शुड बी कंटिन्यू टिल द कंप्लीशन ऑफ योर जाप, उतना देर तक जलना चाहिए, ठीक है। चलो, थैंक यू आभा जी, मैं ठीक है। एक्चुअली फॉरगॉट दैट। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू। So with this we are on time, we are on dot. Now I will, आज जैसे मैंने कहा है कि मैंने आपको डे वाइज देवी का नाम, देवी का मंत्र, अगर हुआ तो कौन सा फ्लावर, वो सब लिख के भेज दूंगा आपको, so that it's easy for all of us to remember and do the sadhana. Thank you for your readiness, thank you for being here, thank you for even coming to this space that you are ready to do it. और इसी के साथ माँ आदिशक्ति की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, आपके ऊपर, आपके परिजनों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, even on to this entire cosmos. So may her blessing always be there on you. Question is again there, is it part of our daily साक्षी दिया देगा? Yes, ये मंत्र के लिए आपको एक्स्ट्रा दिया लगाना ही है, ओके। चलो, so with this till we meet again, most probably on Wednesday, till then मंगलवार से आपको साधना शुरू करनी है, और साधना रुकनी नहीं चाहिए, कंटिन्यू इट, एंड देन वी विल कम अप विथ अवर 9 days महाशक्ति साधना as well. Till we meet again, हर हर महादेव, जय मां आदिशक्ति।